बच्चे को भी मैं क्लास से परमानेंटली बाहर करूंगी, ठीक है ना? मेरी आवाज सबको आई है मुझे लगता है। जो ये प्लानिंग कर रहे हैं ना, जैसे ही मैम ज्वाइन करेंगी हम स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे तो मैम बाहर हो जाएंगी, है ना? तो ये जो जो प्लानिंग करके बैठे हुए हैं पहले से और स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे टर्न बाय टर्न, तो उनको मैं परमानेंटली अपनी क्लास से बाहर कर दूंगी। कल से आपको इनविटेशन नहीं आएगा मेरी क्लास का, किसी भी मैम का नहीं आएगा, याद रखना। ये वाली शैतानी करोगे इनविटेशन ही नहीं भेजेंगे फिर आपको। तो ये वाली शैतानी बिल्कुल नहीं करना है, इसमें आपका नुकसान हो रहा है, हम क्लास अच्छे से कर नहीं पा रहे, ठीक है ना? तो ये वाली शैतानी कोई नहीं करेगा स्क्रीन जानबूझ के शेयर करने की। आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो ये सब काम करके। चिन्मय, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, Chinmay, ma'am. please. Now tell me, am I audible clearly? Yes, Am I ma'am. audible clearly? Okay. So let me try to share my screen. मेरा वीडियो मैं ऑफ ही रखूंगी जिससे कि आपको मेरी आवाज अच्छे से आ जाए। वीडियो देखना जरूरी नहीं है मैम का, आपको मेरी आवाज आ क्या वो जाए। कट कर आ रही है अभी? नेटवर्क इशू कनेक्ट, ओके मैम स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। वेरी गुड चिन्मय, थैंक यू चिन्मय। Now my screen is visible, so you can see Yes, slides on screen. Yes? Okay. What is written No, ma'am. on this slide? What is written? Can you see that? Stop मैम आपकी स्क्रीन पर COVID-19. दिख रही है। स्क्रीन पे क्या लिखा है आपको दिखाई दे रहा है? सुनाई नहीं दे रही। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस मैम, आपका बस लोगो दिख रहा है, वो नहीं दिख रही है, पर कुछ दिख नहीं रहा। मैम अच्छा, आपको स्लाइडिंग। नो प्रॉब्लम। यस मैम, आपकी स्क्रीन आ गई। सारे लोग नहीं बोलेंगे, है ना? I cannot प्लीज म्यूट करो। देखिए कौन कौन बार अनम्यूट कर रहा है। जीवी का भाग्य, मोहिनी, हार्दिक, पीपीटी इज विजिबल और नॉट? Is it visible, Radhika? Yes, ma'am, I can see, but there is. Can you read what is written on the PPT? Yes, ma'am. Ma'am, आप पढ़ सकते हो बेटा? Yes, ma'am. Can you read? आप रीड करेंगे तो मुझे पता चलेगा। रीड की। COVID-19 from spreading. इसका जो आपको स्क्रीन दिख रही है आप लोग विजिट कर रहे हो बार बार। Read the message written on screen. Thank you very much. Mute yourself. Chinmay, read the message. Chinmay. Okay. Devanshi. Yes, Devanshi, read the message. Ma'am. Message. Yes, Chinmay, ma'am. read the message. Chinmay, read करो. Read करो क्या लिखा है? Ma'am, your voice is not clear. Ma'am, इधर स्क्रीन में क्या लिखा है? stop COVID-19 from spreading. Yes. Very good. Thank you. हमने कोविड-19 यानी कोरोना को स्टॉप करना है स्प्रेड होने से। कैसे करेंगे वो आगे मैं दिखाऊंगी। ओके? देवांशी, चिन्मय, म्यूट योरसेल्फ। Yes. Yes, ma'am. What is written? Can you read? Yes, ma'am. Stop COVID-19 Please. from spreading. Next slide. अभी slide दिखा है। आपको क्या लिखा है?
Be supportive, be careful, be alert, be kind, and be ready to fight COVID-19. Visible to you, Manshi? No, ma'am. बस stop COVID-19 from spreading ही दिख रहा है. अच्छा, वही दिख रहा है. हो सकता है वापस नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही हो. Be supportive, be careful, be alert, be kind, Yes, ma'am. and be to fight COVID-19. हर्ट रहना है, कैसे रहना है, हम सपोर्टिव रहना है. कैसे? केयरफुल कैसे रहोगे? यू हैव फेस मास्क. आपको पूरे समय जब भी आप बाहर निकलते हो सकता है पॉसिबल घर में कोई आता है ना, तो भी आपको अपना फेस मास्क हमेशा पहनना है. सेफ्टी ऑफ अदर्स, ठीक है. ये फेस मास्क वाला स्लाइड दिवांशी आपको दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, so you have to wear a face mask for your safety as well as मैम लेफ्ट हो गई. मैम मैम लेफ्ट हो गई. okay, I will again present the screen. Mute yourself. Everybody please mute yourself. सायरा अब सायरा को बार बार मत बोलो, जिसका नाम ले रहे हो वही अनम्यूट करेगा. ठीक है. सानवी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ and tell me my screen is visible or not. No, ma'am. My screen is not visible. No, ma'am. I have yes or no beta? No, ma'am. Your screen is not visible. मैम स्क्रीन प्रेजेंट आप एक बार और कर सकती है प्लीज मैम. मैम आपकी स्क्रीन तो दिख रही है बट उसके अंदर की बुक नहीं दिख रही. पीपीटी नहीं दिख रही आपको? ओके, फिर से शेयर करती हूँ मैं. अच्छा, आप लोग सब ना वीडियो ऑफ करो थोड़ा सा.
वीडियो ऑफ करो, वीडियो देखते उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या। वीडियो ऑफ करो अपना सब लोग थोड़ा सा बेटा। थैंक यू। आई थिंक सानवी। यस मैम, अब आ गई है। थैंक यू। आप वीडियो ऑफ रखो, नेटवर्क प्रॉब्लम। यस थैंक यू। ओके नाउ कोई भी वीडियो भी मत ओपन करो और म्यूट रखो अपने आप को, ठीक है। तो हम जल्दी से इन स्लाइड्स देख पाएंगे, ठीक है। You have seen the first slide already. You have seen it. How we can stop spreading this COVID-19. क्या क्या करना है हमको इसको stop करने के लिए? We have to be careful. We have to be alert, and we have to be careful, supportive. Okay. What we have to do? We have to wear a face mask. हमें face mask, हाँ, face mask हमको पहनना है, ठीक है। बस मुझे एक सानवी अनम्यूट करके गाइड करेगी कि मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। सानवी। मैम मैम इनको लिखना है क्या? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं लिखना है, बस आपको सुनना है और उसको फॉलो करना है। मैंने अभी बोला है सिर्फ सानवी थोड़ा सा मुझे गाइड करेगी, बाकी सारे प्लीज म्यूट करो, क्योंकि नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने के कारण आप बार-बार। मैम डाउट है। हाँ मैम डाउट है। क्या है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा बेटा। डॉक्टर वाला स्क्रीन पे सेंड करी थी मैम, फिर से कर सकती हैं क्या मैम प्लीज? बेटा ये आपको लिखना नहीं है, ये आपके अवेयरनेस के लिए कि आप अब बाहर निकलेंगे या कहीं भी जाते हैं तो आपको अपने आप को कैसे केयर करना है, ये आपके लिखने के लिए नहीं है बेटा, ठीक है। दिस इज जस्ट टू अवेयर यू, ओके। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। नाउ प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। How you can protect yourself to save yourself from this COVID-19. Okay, you have to wear a face mask all the time. Then you have to wash your hands or sanitize your hands at regular intervals, and you have to keep 6 feet distance. Physical distancing, पता है ना आपको, दूसरों से 6 फीट की दूरी पे, 2 गज की दूरी पे खड़े रहना है, कहीं भी हो आप, ठीक है। अगर आपके घर में कोई दूसरा आता है बाहर से तो उससे भी आपको दूर से बात करनी है, और आप बाहर जाते तो भी आपको भीड़ में मिक्स नहीं होना है, बहुत पास पास खड़े नहीं रहना है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वन इज यू हैव टू वेयर अ फेस मास्क, यू हैव टू कीप 6 feet distance from others, and you have to wash your hands at regular intervals. These 3 things you have to follow to save yourself from COVID-19. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. देवांशी, अभी मैंने आपको म्यूट करने के लिए बोला है, अभी मुझे जिसको बोला वही करे। चिन्मय तुम भी थोड़ा सा वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑन करने से थोड़ा सा दिक्कत जा रही है, और अनम्यूट करो चिन्मय। अथर प्लीज म्यूट करो, अथर। चिन्मय अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। हाँ चिन्मय, मैंने स्क्रीन शेयर की, आपको सारी पीपीटीज दिखाई थी बेटा चिन्मय? आपको सारी जो मैंने अच्छा, आपको सारे प्रेजेंटेशन दिखाई दिए जो मैंने अभी दिखाया है? यस मैम। सारी स्लाइड्स दिखाई दी? यस मैम। Okay, Athar, now unmute yourself, Athar. Chinmay, please mute yourself. Athar, Athar, क्या बता? पापा का क्या है बेटा? अथर फिर से। मैम बर्थडे। अच्छा ठीक है, वो तुम घर में मना लेना, ठीक है। अभी आप मेरी बात सुनो अथर। सबसे पहले मैंने जो स्लाइड दिखाई उससे क्या लिखा था, क्या करना चाहिए आपको? मैम मास्क लगाना चाहिए। वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। आराध्या राठौर, प्लीज म्यूट। आराध्या राठौर, दूसरी स्लाइड में आपने क्या देखा? मैम हम लोग
हमें 6 फीट की दूरी बनाए रखना चाहिए। हाँ, हमें भीड़ में नहीं जाना चाहिए और दूसरों से हमें 6 फीट की दूरी पे खड़े रहना चाहिए। वेल डन, वेरी गुड। नेक्स्ट अलीना, थर्ड स्लाइड में आपने क्या देखा? थर्ड स्लाइड में अलीना, प्लीज वियर अ फेस मास्क। वो तो पहले ही बता दिया बेटा। थर्ड स्लाइड में क्या देखा था आपने? एक लास्ट वाली स्लाइड। हाँ, You have to 6 feet distance to other bounds. and one more slide was there. What was written on it? One more slide was there. Do you remember? Okay, Shivansh, do you remember? No, ma'am. Okay, Sanvi, do you remember? बेटा आप लोग वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑन करने से दिक्कत जा रही है। चिन्मय, पूरी वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑफ करो। सानवी, Yes. हाँ। Yes, ma'am. There is one more slide. Can you explain that? एक और स्लाइड थी, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा? Yes, ma'am. हाँ, what was written in that? मैम हमें सैनिटाइजर करना चाहिए और हाथ धोने चाहिए। Very good, very good. We have to wash our hands at regular intervals, and if not possible, then we have to sanitize our hands. Okay, so these three things we have to follow to save ourselves as well as others from COVID-19, yani from Corona. Okay, so I hope you all are following these things. सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं ऐसे मुझे लग रहा है। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू शेयर। कोई भी वीडियो ऑन मत करो, वीडियो ऑन करने से क्या हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब मैं जो आपको इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना? कई जगह पे प्लांट्स को एनिमल्स की जरूरत है, कई जगह पे एनिमल्स को प्लांट्स की जरूरत है। तो वो एक वीडियो मैं आपको 2 दिन से दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम आई एम नॉट एबल टू शेयर दैट। सो टुडे आई विल ट्राई टू शेयर इट। ओके, लेट अस सी। अब मैं जिसको बोलूंगी बस वही बच्चा थोड़ा सा मुझे गाइड करेगा, सारे लोग एक साथ अनम्यूट नहीं करेंगे। Sanvi, my screen is visible? Yes, ma'am. Thank you, beta. I would like to share one video which you will see how animals and plants are dependent on each other. एक दूसरे के ऊपर वो कैसे डिपेंडेंट है। कल मैंने एक YouTube का वीडियो भी आपको भेजा था। I hope everybody has watched it. जैसे उस स्टोरी में हमने देखा कि जब वो फार्मर पैरेट्स को अलाउ नहीं करता है गार्डन में आने के लिए, तो वो मैंगोज उसके दूसरे साल और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि उन मैंगोज को इंसेक्ट्स खा जाते हैं। अगर पैरेट्स आते गार्डन में तो वो कुछ मैंगोज भी खाते इंसेक्ट्स को, है ना? तो उन्होंने पैरेट्स को अलाउ नहीं किया, तो उस फार्मर का और ज्यादा नुकसान हुआ। तो यही है, एक दूसरे के हम डिपेंडेंट है। अगर हम एक चेन को रोकते हैं तो कुछ ना कुछ नेचर में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना? यही मैं आपको इस वीडियो से दिखाना चाह रही थी। कल मैंने इसीलिए ये यहाँ से हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने एक यूट्यूब का वीडियो आपको भेजा था, वो थोड़ा हायर क्लासेस के लिए था। तो ये आपका वीडियो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। ध्यान से वॉच करना इसको बेटा, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। It is coming. Wait. Sanvi, is it visible, beta? Sanvi? Yes, ma'am. What is written on the screen? Can you read that loudly? Yes, ma'am. Please read it loudly.
helping each other. Very good, very good. Now I will play the video. Please mute yourself and watch the video very carefully. How the plants help us and how animals help the plants. Aisha, look, a bird enjoying a buffalo ride. Asha, you are looking at one of nature's most amazing relationships. That bird is called a cattle egret. The cattle egret eats the insects on the buffalo's body. The buffalo gets rid of the insects and in return, the cattle egret gets its food. That's right. You will find many such relationships between plants and animals. These relationships can be beneficial or harmful. Plants depend on animals and humans for carbon dioxide. We breathe out carbon dioxide, which is used by plants to make food during photosynthesis. Plants also depend on certain animals, such as butterflies and birds, to carry pollen and disperse their seeds. Animals such as frogs and snakes protect plants by eating insects and rodents that are harmful to plants. Some plants, such as the pitcher plant and Venus flytrap, eat insects. These plants, therefore, depend on animals for their food. Just as plants depend on animals, they also depend on other plants. For example, vanilla orchids and grapes use other plants for support in order to climb and reach out towards sunlight. Some plants obtain their food from other plants. The cascuta plant wraps itself around other plants to absorb food and nutrients. Mistletoe grows on oak trees to absorb food and other nutrients from them. Directly or indirectly, all animals depend on plants for food. Animals that eat plants are called herbivores, and those that eat plant-eating animals are called carnivores. Besides food, animals and humans also obtain oxygen from plants. Plants give out oxygen during photosynthesis. Animals and humans breathe in this oxygen. Plants also provide shelter to animals. Most birds build their nests on trees, and some live on tree barks. Insects like millipedes and ants live on leaf litter. We use wood from plants to build houses and furniture. Besides plants, animals also depend on other animals. For example, the sea anemone sits on a hermit crab to move around the water and eats scraps of food left by the hermit crab. In return, the sea anemone protects the hermit crab from fish by waving its tentacles. The remora fish takes shelter under a shark. It feeds on the food scraps dropped by the shark. The shark is neither benefited nor harmed by the fish. Ticks and lice live on animals to suck their blood. Similarly, tapeworms live in human intestines and absorb food.
These are examples of relationships in which one organism benefits while the other is harmed. Thus, we can conclude that all living organisms on Earth depend on each other for survival. One more video I will share. In that video, you will see the food of different animals. Devanshi, screen is visible, beta? Yes, ma'am. And audible also? Yes, ma'am. Now, what you have seen in that video, that we are dependent on the plants for food, shelter. Yes, we means animals, all the animals, birds, human beings, wild animals, pet animals, domestic animals, birds. We all are dependent on the plants for oxygen, food, shelter, furniture. Yes, and plants also dependent on animals, because when we breathe out carbon dioxide, and which is helpful to the plants. हम जब breathe out करते हैं तो हमारे अंदर से कौन सी गैस बाहर जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स को हेल्प करती है. और कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो सीड्स को, जो प्लांट्स के सीड्स होते हैं ना, उनको अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, जिससे कि न्यू प्लांट ग्रो हो जाते हैं. तो इस तरीके से प्लांट्स की भी हेल्प हम करते हैं. कुछ जैसे कि स्नेक्स है, ये रैट्स को खा जाते हैं, तो प्लांट्स, रैट्स जो ग्रेन्स खाते हैं, उनसे प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिलता है. Am I right? तो इस तरीके से हम भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और प्लांट्स भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. एक दूसरे की जरूरत है हमको. ठीक है ना? Now in this video you will see what is the food of different types of animals. Eating habits of animals. All animals do not eat the same food. Different animals have different. Utkarsh, is it audible and visible, Utkarsh? Yes, ma'am. आवाज भी आ रही है वीडियो की अच्छे से बेटा? Yes, ma'am. Okay, thank you बेटा. Eating habits. Based on the eating habits, animals are divided into 4 groups: herbivores, carnivores, omnivores, and parasites. Here they have categorized animals into 4 categories. Herbivores, animals are those who eat plants. Carnivores are those who eat flesh of other animals, and omnivores can eat both plants as well as flesh of other animals. And the 4th category, which I have not discussed, that is parasites. Okay, let us see that. What is that? Herbivores are the animals that eat plants. Animals such as cow, deer, giraffe, and elephants are herbivores. Herbivores have broad teeth to chew the plant material. Carnivores are animals that eat flesh of other animals. मैम आप क्या कट करा रही हैं? Tiger and crocodiles, and birds such as eagle and vulture are carnivores. Carnivores have sharp teeth to tear flesh. The carnivores which hunt and kill their prey before eating are called predators. Omnivores are animals that eat both plants and flesh. Animals such as bear and human beings are omnivores. Omnivores have both sharp and flat teeth. Parasites are animals that live on or inside other animals to obtain its nutrients. Mosquitoes feed on the blood of humans, and so are parasites. Now here we have seen the example of parasite. Who is parasite here? Mosquitoes, because they feed on our blood. है ना? वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है. Summary:
Animals that eat plant are called herbivores. Animals that eat flesh are called carnivores. Animals that eat both plant and flesh are called omnivores. Animals that depend on other animals for food are parasites. Okay. Now we will stop here. I will stop presenting now. Now, what is your today's homework? You have to write down 2 examples of each category. You have to write down names of 2 animals who are carnivores. You have to write down 2 examples of who are omnivores and 2 examples of herbivores. Okay? Have you understood the homework? होमवर्क समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जरा कुशाग्र को एक्सप्लेन कर कुशाग्र Yes, ma'am. कॉपी में क्या लिखना है कुशाग्र बेटा? बेटा 3 कैटेगरीज में लिखना है. फिर से मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो. जीविका प्लीज, देवांशी प्लीज, अलीना प्लीज. हाँ, मैं बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ. ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, चैट बॉक्स में टाइप करती हूँ, आप लोग नोट डाउन करें. ठीक है, चैट बॉक्स में मैं टाइप कर रही हूँ. मम्मी ये चैट बॉक्स में से लिखा है. ईवीएस नोटबुक में लिखना है बेटा. मैम अब नहीं लिखना है. मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे. इज इट विजिबल? Yes, ma'am. It's visible. Yes, start writing. Write 2 examples of each. Herbivores. Examples मतलब names लिखना है आपको. ठीक है ना? मेरी पे नहीं आया. Carnivores. मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना बेटा? Yes, ma'am. तो मेरी आवाज से लिख लो. Omnivores. Write 2 examples of each. Herbivores, carnivores and omnivores. Okay? और आप मुझे व्हाट्सएप पे आज भेज सकते हो. मैं चेक करूंगी किसने किसने लिखा है कॉपी में. मैम ये क्वेश्चन के नीचे वाले इसके आंसर है. इनके आंसर आपको खुद लिखना है. जैसे कि हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जीविका आप बताइए, हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जीविका प्लीज एक्सप्लेन. मैम हाँ, हु आर हर्बीवोर्स? विच एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स? अभी वीडियो में कितने अच्छे से दिखाया था बेटा, आप लोग देखते नहीं हो. मैम जो पत्ते खाते हैं, जो प्लांट्स, लीव्स, ग्रास ये सब खाते हैं वो होते हैं हर्बीवोर्स. सो भव्यांश, नाउ टेल मी 2 names who are herbivores. भव्यांश आप बता सकते हो 2 names of animals who are herbivores, जो सिर्फ प्लांट्स को मिलने वाला फूड खाते हैं. मैम जेब्रा. यस, वेरी गुड. अभी वीडियो में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखे. यस कुशाग्र. मैम रैबिट. Yes, rabbit. Correct answer. Like that, carnivores are those who eat only flesh of other animals. Kaviuddin, can you give 2 examples of carnivores? मैम जेब्रा. यस मैम. Zebra carnivores कैसे हो सकता है बेटा? Zebra कैसे हो सकता है carnivores? Flesh of other animals. Carnivorous animals eat the flesh of other animals. Can you give 2 examples, Kaviuddin? Ma'am, lion and tiger. Yes, good. And omnivores are those who
plants as well as flesh of other animals. Yatharth, can you give 2 examples of omnivores? Yatharth? Utkarsh, can you give 2 examples of omnivores? Dog, cat. Yes, correct. Dog and cat. Correct answer. तो आपको ये आज अपनी कॉपी में लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना है इसकी फोटो खींचकर. पीडीएफ मत भेजो, फोटो खींचकर भेजो. ठीक है? Now we will stop here. All of you join your hands. Close your eyes. नेक्स्ट वीक मंडे को, मेरी बात ध्यान से सुनना, नेक्स्ट वीक मंडे को आपका टेस्ट होगा सेकंड असेसमेंट के लिए गूगल फॉर्म से. कोई भी एब्सेंट मत होना. सिलेबस क्या है मैंने कल व्हाट्सएप पे डाला है, सबने देख लिया था ना? Yes, ma'am. फोटोज हाउस फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ. फोटोज हाउस, व्हाट इज कुकिंग, द स्टोरी ऑफ फूड एंड फूड वी ईट. 4 लेसन्स आर देयर फॉर. मैम देवांशी के पास नहीं आया. बेटा देवांशी तुम्हारा क्या प्रॉब्लम हो रही है? कल मैंने दोबारा सारा भेजा था देवांशी व्हाट्सएप पे. दोबारा तुमने बोला तो मैंने दोबारा भेजा. तुम्हारा व्हाट्सएप में किसका चेक करो बेटा. देवांशी यस मैम. मैंने दोबारा सारा कुछ भेजा था कल. देवांशी आपने बोला था ना का नाम लो ना. यस मैम, कुछ थोड़ा सा होमवर्क आया था एक पीडीएफ. और मैंने कल ये भी भेजा था कि मंडे को आपका गूगल टेस्ट होगा गूगल फॉर्म से. और ये फॉर्म जो टेस्ट होगा इसके नंबर काउंट होंगे, याद रखना. सेकंड असेसमेंट के लिए आपका रिपोर्ट कार्ड इसी से बनने वाला है. ये भी मैंने डाला था कल. अपना अपना व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करें. अभी पूरे वीक आपको प्रिपरेशन करना है इन 4 लेसन्स का. ओके? नाउ जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, वी विल डू शांति पाठ. मैम टेस्ट कब है? आपने कौन से चैप्टर का नाम लिया फिर से ले देंगी? शांति शांति शांति. बेटा डाउट है वो रुक जाए, बाकी सारी मीटिंग छोड़ सकते हैं बेटा. मैम